Hello students, let's continue with the chromosomal aberrations. In previous video I talked on the deletion chromosomal aberrations. So today we discuss on the duplication with reference to their origin and genetic effect. So in first point as an introductory, you have to write about the chromosomal types of chromosomal aberrations. In that there are mainly two types. One is the numerical abnormalities and structural abnormalities. In numerical abnormalities is also undergoes two types. First one is the euploidy and aneuploidy. Euploidy means there is the set of chromosomes are affected, and aneuploidy in that there is the number of chromosomes are affected due to the abnormality. So this is all about the numerical and about the structural abnormalities. There are four types. First one deletion, second is the duplication, inversion and translocation. So today we focused on the duplication. So in case of duplication, chromosomal variation, first of all you know about the definition. This duplication is defined as a part of chromosome is duplicated. In the duplication aberrations, uh, there is the part of chromosomes are duplicated and the aberrations are formed. So look in this figure. In first chromosome A, B, C and D, E, F, G. But after the duplication, the part of E, it will be duplicated and the structure is like A, B, C, D, E, E, F, G. So this is the EE is the duplicated region. So in this way the part of segment of chromosome is duplicated. So what is the origin of duplication? So this duplication can arise as a result of unequal क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस. तो जब भी मियोसिस होता है, मियोसिस के टाइम पे in meiosis crossing over is takes place, and at that time if the unequal crossing over is takes place, then at that time the duplication may be arises. तो तब वहाँ पे डुप्लीकेशन प्रोसेस होती है. तो these also arises through the chromosomal breaks and reunion of chromosomal segments with its homologous chromosome. तो डुप्लीकेशन और कैसे होता है? तो जब ब्रेक्स होते हैं, रीयूनियन ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होते हैं इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वहाँ पे भी हमें डुप्लीकेशन प्रोसीजर दिखाई देती है. देन these depending on this location of the duplicate region of the chromosome, they following different types. तो एग्जैक्टली कहाँ पे डुप्लीकेशन होता है उसके हिसाब से इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज द टैंडम डुप्लीकेशन, सेकंड इज द रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, third is the displaced duplication, and fourth is the transposed duplication. So we look one by one. In first tandem duplication में this duplication takes place just adjacent to the नॉर्मल. मतलब जो पहला वाला सीक्वेंस है उसके साइड में ही ये एडजस्ट होता है. दैट इज द टैंडम duplication. Look in this figure first. In that normal chromosome A, B, C, D, E, F, G, H. But after the tandem duplication,
This DEF region is duplicated and they form ABC, DEF, again DEF and GH. From figure it is clear that this duplicated region is just placed near the normal. जहाँ पे normal है उसके साइड में ये duplicated portion replace हो रहा है. Then second type of this duplication is the reverse tandem duplication. In this duplicated region we just reverse of the normal sequence. जो normal sequence है उसके exactly reverse sequence रहता है, but it is placed at that जो पहला वाला प्लेस है उसके ही साइड में प्लेस होते हैं. तो लुक इन दिस फिगर फर्स्ट इन नॉर्मल क्रोमोसोम ABC, DEF, GH. देन इन द रिवर्स रैंडम डुप्लीकेशन में हमें क्या दे रहे ABC, DEF, फिर FED, GH. तो जो सीक्वेंस है DEF वही रिवर्स हुआ है FED में और उसके ही बाद में एडजस्ट हुआ है. तो दिस इज द रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन. Then third type of the duplication is the displaced duplication. In the displaced duplication, this duplicated segment is on the same side of centromere on the other side. जो duplicated segment हो रहे हैं वो उसी साइड में प्लेस होंगे, नहीं तो जो सेंट्रोमेयर का जो अपोजिट पार्ट है अपोजिट पार्ट में वो रिप्लेस हो जाएंगे. लुक इन दिस फिगर, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन के फिगर में आप देखो नॉर्मल क्रोमोसोम इज द ABC, DEF, GH. बट इन होमोब्रैंकियल डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, होमो मीन्स उसी साइड में जो भी है वो उसी साइड में डुप्लीकेशन हो रहा है. तो वहाँ पे जो ABC, DEF, G, फिर DEF और H. तो जो DEF जो पोर्शन है वो डुप्लीकेट होके आगे जो G और H का जो प्लेस है वहाँ पे बीच में वो एडजस्ट हो रहे. तो उस सेंट्रोमेयर के उसी साइड में वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो उसे होमोब्रैंकियल डुप्लीकेशन बोलेंगे, डिस्प्लेस्ड होमोब्रैंकियल डुप्लीकेशन. देन इन केस ऑफ डिस्प्लेस्ड हेट्रोब्रैंकियल डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, वही रीजन दूसरे साइड में जाके रिप्लेस हो रहे हैं. दैट मीन्स जो DEF रीजन है वो सेंट्रोमेयर के राइट साइड में था, अब वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो क्रोमोसोम में ज्वाइन हो रहे. तो ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं हेट्रोब्रैंकियल डुप्लीकेशन, दैट इज डिस्प्लेस्ड हेट्रोब्रैंकियल duplications. Then next fourth type is the transposed duplication. In transposed duplication, in that duplicated region of chromosome get attached to the non-homologous chromosome. जो ऊपर तीनों हमने देखे कि वहाँ पे जो भी डुप्लीकेशन और रिप्लेसमेंट हो रहा है वो होमोलोगस पेयर में हो रहा है. लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसपोज डुप्लीकेशन यहाँ पे जो भी डुप्लीकेशन रीजन प्लेस हो रहे these placed on the non-homologous chromosome. So ABC, DEF and LMNOP. So these are the two different chromosomes. So the
portion from the DE is get added to this chromosome N in between the N and O. So these are duplication takes place in the non-homologous chromosome. Then next point is the cytological and genetic effect. So first effect, that is the relatively large duplications are detectable due to the presence of loops formed by the duplicated segment during the पैचेटिन stage of meiosis first. तो पैचेटिन आपने meiosis स्टडी किया है. meiosis में in meiosis first, which are the stages? Leptotin, zygotin, पैचेटिन and dikinesis. So in the पैचेटिन stage, there is the crossing over is takes place. When this crossing over is takes place, there is a lot of chances for this duplicated regions due to this due to the various loops are formed or crossing over is takes place. That's why the duplication chances will be more. Then in case of terminal reverse tandem repeats affected and many fold back and paired with the additional segment of same chromosome or corresponding segment of the homologous chromosome. So जो टर्मिनल रिवर्स टैंडम है रिपीट्स है, इन दैट केस वहाँ पे जो भी सीक्वेंस है जो भी सीक्वेंस है सीक्वेंस वहाँ पे जो फोल्डिंग्स और जो सेगमेंट एडिशन है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ रिवर्स. जो रिवर्स टैंडम में क्या होता है, जो सीक्वेंस है रिवर्सली अरेंज रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि डुप्लीकेशंस के उसमें जो पेयर्ड जो क्रोमोसोम रहते हैं उसमें कुछ एडिशनल सेगमेंट हो जाते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाता है. Then a duplication of a particular genetic region can have phenotypic effect. तो जब भी duplication होता है तो that will be also affected the phenotypic effect, क्योंकि there is the due to these chromosomal changes, so the genetic coding or genetic जो भी genes है that will be changed, so the ultimately they affect on the phenotypic character. जो external character है वो natural इसकी वजह से affect करेंगे duplication की वजह से. Then in Drosophila, normal eye is oval but bass-eyed Drosophila have narrow slit-like eyes. So in Drosophila में these duplications are affected on the eye character. So these are all about the duplication. Lastly, I conclude that क्या क्या हमने देखा कि what is the chromosomal aberration. In that today we talk on the duplication. In this duplication there is a part of chromosome is duplicated. In origin of duplication, when the crossing over takes place in the meiosis, there is the chances of duplication, and also when in case of homologous chromosomes, when chromosome breaks or reunion, there will be chances of duplication. Then this duplication, depending on the location, the duplicated region is divided in 4 different types.
first one is the tandem duplication, reverse tandem duplication, displaced duplication and transpose duplication. टैंडम डुप्लीकेशन में हमने देखा जो डुप्लीकेटेड रीजन है इट इज सिचुएटेड जस्ट एडजेसेंट टू नॉर्मल. देन रिवर्स टैंडम में डुप्लीकेटेड रीजन इज जस्ट रिवर्स टू द नॉर्मल सीक्वेंस. डिस्प्लेस डुप्लीकेशन में क्या होता है कि डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रोमियर और ऑन द अदर साइड, दैट इज homobranchial duplications or heterobranchial duplications. Then last type is the transpose duplication. This is happening in case of non-homologous chromosome. Then cytological and genetic effect. These mostly it is observed in the meiosis first at the time of Pachytene when crossing over takes place, and also at the terminal reverse or terminal repeats. They affected the duplication process. These effect mostly the duplication affected on these phenotypic effects, that means the external characters, and also these affected beyond the Drosophila. So today I stop here. Next video we look the next types of the chromosomal apparatus.